बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ये जो ब्लॉग है, दिस इज़ अ फूड ब्लॉग। आफ्टर गतिमान के ट्रैवल ब्लॉग के बाद है फूड ब्लॉग, क्योंकि गतिमान एक्सप्रेस में हमारा लंच वगैरह कुछ इंक्लूडेड नहीं था। झांसी स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बारबेक्यू नेशन है, तो हम लोग ने प्लान किया कि झांसी फोर्ट जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। एंड खाने के मामले में हम लोग दोनों भी बहुत फूडी है, क्योंकि मेरे साथ शुभम भाई बैठे हैं। बारबेक्यू नेशन बेसिकली फेमस है उसके स्टार्टर्स के लिए। लाइक यहाँ पे जो आते हैं मेन कोर्स से ज़्यादा उनका फोकस स्टार्टर पे रहता है। लाइक मैं बहुत बार बारबेक्यू नेशन गया हूँ लगभग, तो अभी का जो टाइम है वो है स्टार्टर का। तो आपको एक एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ फूड के और यहाँ के एम्बियंस के, तो देखो। मैं भी मुंबई से हूँ, मुंबई में भी बारबेक्यू नेशन गया हूँ, बट अभी एक्साइटेड हूँ यहाँ के सर्विस के लिए। यहाँ आपको सबसे अच्छा फील मिलेगा सर, लाइक दुबई वाला फील मिलेगा सर। ओके ओके, वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। आप देख सकते हैं एम्बियंस भी हमारा कितना अच्छा है सर। हाँ, एक्चुअली यहाँ आने का जो सबसे मेन रीज़न था ना, कोई और रेस्टोरेंट एसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। जी सर। इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और आपको एसी चाहिए, और प्लस हमने कहा था ट्रेन से आए थे, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, हमने कहा कुछ अच्छा था, तो लेट्स गो फॉर अ बारबेक्यू नेशन। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इधर का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, इन्होंने मैनेजर से हमसे अच्छे से बात किया। स्टार्टर खाने का तभी हम लोग मेन कोर्स खा रहे हैं। बेसिकली स्टार्टर बहुत टेस्टी है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं बीबीक्यू में आके मोस्टली स्टार्टर ही खाते हैं, क्योंकि बीबीक्यू की स्टार्टर बहुत फेमस है। अभी स्टार्टर खाने के बाद हम मेन कोर्स का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं बीबीक्यू में बहुत बार आ चुका हूँ और बहुत बार स्टार्टर खा चुके हैं, पर मेन कोर्स का भी एकदम मन लगा के नहीं खाई। बट अभी टाइम आ चुका है मेन कोर्स को पूरे आनंद से मनापसंद खाने का। अभी दिस इज द मेन कोर्स एंड शिवम भाई को भी बहुत मज़ा आ रहा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है बीबीक्यू में फर्स्ट टाइम? तो ये फर्स्ट टाइम बीबीक्यू में और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं पहले बार आ चुका हूँ, बट मेन कोर्स कभी नहीं खाया था, तो अभी मेन कोर्स जरूर ट्राई करता हूँ और आपको बता दो कैसा था। पूरा टेस्ट द रोटी ऑल्सो। ओवरऑल फूड इज टेस्टी एंड ऑसम एंड द क्वालिटी ऑफ द चिकन इज ग्रेट। जब बारबेक्यू नेशन जब आते हो तो आपका स्टार्टर करने का यहाँ पे कॉम्बो रहता है, मेन कोर्स का सामने किचन रहता है, और यहाँ पे दो टाइप्स रहते हैं, एक वेज का सेक्शन रहता है, एक नॉन वेज का सेक्शन रहता है। तो ज़्यादा नहीं खा पाओगे तो थोड़ा थोड़ा लेके ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि स्टार्टर के साथ साथ मेन कोर्स भी यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। और एग्जैक्ट मेन कोर्स के सामने यहाँ पे डेजर्ट रखे हुए होते हैं और थोड़े सलाद वगैरह रखे होते हैं, आपको दिखाता हूँ।
आप बार्बेक्यू नेशन आते हो तो यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है, तो मेरा एक कहना है कि पर्सनल ओपिनियन है कि अब एक ही जगह पे स्टिक मत हो जाओ, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे खाओ, मतलब आपको अलग अलग मज़ा आएगा, अलग अलग वैरायटी का फूड टेस्ट करने मिलेगा और अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा करके खा रहा हूँ। सो दिस इज़ द मलाई कुल्फी विद द आइसक्रीम। इसके ऊपर सॉरी दिस इज पान कुल्फी विद द गुलकंद एंड टॉपिंग्स। इसका मज़ा कुछ और ही लग रहा है, लग रहा है मैं रियल पान कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द गुलकंद। गाइस ऑलमोस्ट खाना वगैरह खा के हो गया, डेजर्ट लास्ट आइटम खा रहा हूँ, दैट इज फालूदा। फालूदा ओवरऑल ये जगह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये जगह स्टेशन से भी नज़दीक है, 3-4 किलोमीटर है। एम्बियंस सही है और यहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और हेल्पफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते। सो आपको ये BBQ का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक ट्रैवल एज मच यू कैन, एज फार यू कैन, एज लॉन्ग एज यू कैन। बाय, टेक केयर, एंजॉय महाराष्ट्र। बाय बाय। आता मी फालुदा खातो।